10 लाख में आया था। I discussed last time, if I go for learning data.net, and so far we have learned the insert, the update, the delete, the search, and the button, show button, all, and the sum. You can check your copy. But I have gone with the SQL queries. SQL queries. But architecture says, don't try to use SQL query in the front end. Because if you use a SQL query in a front end, whether the query is syntactically correct or not, how do I know? Because I use the command class for SQL command cmd new word SQL query. This is the place you can write your query, you write your logic. So my logic is I want to go for getting entire records or entire columns from a student. This is my request from a form. So I am requesting to database server by the SQL command class and give me entire columns of a table. But I said last time, whenever you go for any interview, don't try to write a SQL query in a SQL command. Because this query, don't say procedure, this query is not yet compiled. And what will compile? The program, the syntax, the name of the class, is it a small or capital or not? So I mean to say, if you compile your program, your front-end syntax will be compiled. Your front-end, your C# syntax will be compiled. Not your query will be compiled. And what is the best part? Query. It should be compiled. When you write any query by any softwares, it is a front end. You go for Java, you go for C#, you go for C++. Use any language to write a query. So what compiler does, it checks only the language part syntax, not the query part syntax. It means the main part is not compiled. What is main part? I said, go to ABS, get admission form and come back to house. Now in the night, fill up the form. Filling the form is most important rather than getting a form. If you write anything wrong, not intentionally, it happens accidentally, might be. Your date of birth, well, even though 1% marks is head-fail in the academic. If you got 59.9, you write 0.9. Don't say, according to your brain, approximately 60%. No, sorry. You can write this statement. So your every information on that paper should be well versed, well structured and well compiled. But unfortunately, the man is filling a form, he is doing some mistakes for writing a form or filling a form. So form is compiled, but the content is not basically what compiled. Or data which he has written on a form is not yet compiled or proper compiled. But logic says form is already compiled. Go and purchase the form by 200 rupees. But what you write should be perfect and to the point. Similarly, I am taking a SQL command. It is a proper class, absolute class. No problem with this class. The problem is only what you are writing within this class. It's a parameterized constructor. It's a parameterized constructor. So don't try to write. Don't try to write. Don't try to write the SQL query in parameterized constructor. So you have to have a solid reason for this, because I worked in a good MNCs in all world, CSA India, I was in CDAC, so I learned from there the discipline in a program.
I learned from there discipline in a program. I haven't learned you write a code without any grammatically, you write a code without any structure. You have to follow some standard. So if you go to any good companies and if you get a chance to write a program, even though for fetching a data, you first write a query, compile your query. What? So before filling the form, open your drawer, get 10th marks, get 12th marks, get a graduation marks, and please write those marks appropriately on that existing form. Don't, I know I had got 59.3 here. No, not like this. Open your marks of 10th and check your marks. So don't write first SQL command class, uncle. First you go to database, write your query, compile your query, then call that query from the what? Not. So this is called early binding. I want to make a 4 cup of tea. Don't do R&D. You know what is combination? I know combination. I know this amount of glass, this amount of water, this amount of milk, this amount of sugar, something like. So if you have a better proportional, you can have better output. So writing a query in double quotes, not yet compiled, it is called late binding. अरे जी कर लेंगे, देख लेंगे, कल इंटरव्यू है ना, देख लेंगे रात में। अरे एक रात में तुम क्या कर लोगे यार? एक रात में तुम पास हो सकते हो, जॉब लेके नहीं आ सकते। ऐसा होता है, और की जॉब न लग गई होती फिर। एक रात की पढ़ाई से तुम्हारा क्या हो? कुछ नहीं होना है। You need to have a civilized for studies. इसको वर्क प्लान। तो आप डबल कोर्स के अंदर जो लिख रहे हैं अंकल, वो सिंटैक्टिकली चेक नहीं हो जाएगा। चेक, पर चेक कब होगा बोलो? रन टाइम। चेक तो होना ही होना है, पर बात ये कंपाइल टाइम में चेक क्यों नहीं हुआ? आपने फॉर्म भरा, वहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट होके आ गया। सॉरी यार, दोबारा फिर से भरा, तुमने ऐसी गलती करी क्यों? मुझे बताओ। भूल गया सर। अरे यार तुम्हारे 59.7 मार्क्स थे, तो 0.3 क्यों लेके आ गए? दिक्कत का वाला क्रॉस वेरिफिकेशन आपको दिक्कत आएगा। तो आपका जो जेन्युइन मार्क्स है, जो आपके परसेंटेज है, जो एकेडमिक सेशन है, आप उसमें थोड़ी भी गलती करोगे, आप अगली बार शक के दायरे में आओ। आप कहीं भी अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज नहीं कर सकते रिज्यूमे के ऊपर। राइट एग्जैक्ट फिगर विच यू हैव गॉट, बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग they will have a third party, they will verify your documents, and if they get mismatch of even though 0.1%, they will sue you, they will reject you, and they will ban for this company for 6 months. Getting? So again oops comes here. What is late binding and what is early binding? I am writing a query, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ जी, ट्रेन टिकट ले लेंगे सर, चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ। क्यों? या तुम रातों से से झगड़े करोगे, 500 कम कर दो, 100 रुपये कम कर दो, बार्गेनिंग करोगे, मैं नहीं जाऊँगा। तो पहले आप डिसीजन मेकिंग करो, बाद में क्या करो? कॉलिंग करो। वो क्या बोलो? अर्ली बाइंडिंग। अभी एक लड़का अंकल आया, ध्रुव त्रेहन नाम का बच्चा, लाजवाब लड़का, 11 के जून में आया और सितंबर सेक्टर से बाहर निकल गया। क्या उसकी प्लानिंग थी? जुलाई, 11 का बच्चा है, जुलाई अगस्त, आपके वाले बैच में था ध्रुव त्रेहन, जुलाई अगस्त सितंबर, क्या उसकी लड़की की दिमाग थी? 3 महीना टू माई सेंटर एंड होल डे, और उसके फादर उसको ड्रॉप करते थे यहाँ पे, और कभी कभी उसके फादर दिन में आके उसको अपने से लंच भी करवाते थे। The father was so supportive and so cooperative for the kid. Means he was caring every moment. And only within 3 months, he has got a job in Gurgaon in 2.4 package as a fresher, 11 pass out. And now he is learning nowadays SharePoint, advanced course he is learning.
अगर उसे मुझसे सीख के चला भी गया, इसी को बोलते हैं अंदर चतुर बच्चा। 3 महीना, अब कोई रेफरेंस मेरा नहीं कि किसी के द्वारा, उसके फादर गवर्नमेंट जॉब में, सर 3 महीना काफी था आपके साथ, मॉर्निंग टिल इवनिंग। दैट्स व्हाट अर्ली बाइंडिंग। जो आदमी 8 घंटा मेरे सेंटर को देगा इनटू 3 मंथ्स, वो सोचो क्या होगा, एक प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। या 2 घंटा इंटू 12 महीना, या 2 घंटा इंटू 7 महीना, तो 3 महीना उसने कम कर ली ना। The father was guiding him. You go morning center and you stay till evening, late evening. दिन में मम्मा से बातें कर आधे घंटे फोन पे, सर आप तो जान दोगे नहीं, आप पापा ने उसने कहा था कि नहीं आप देखना ही जाना, घर ना जा पाए, बस देखना, ध्यान रखना अपना। मुझे बजाय भी बात करते थे, आप ध्यान रखना ये घर ना जाए, बस ये घर जाएगा मम्मा में चिपका रहेगा, टीवी देखेगा बैठ के, इसको ज़्यादा सॉफ्ट करना मम्मा के साथ, बस वो हम नहीं चाहते कि अभी इसके पढ़ने का समय है, मम्मा जिंदगी भर इसी के साथ रहेगी। अगर भाई लड़ाई बीच में हो, एक क्लास करे भाग जाए, फिर मेट्रो से सर बहाना मार दे। उसके फादर वाज प्रैक्टिकल, कि पता है कि हाउ यू कैन गेट अ जॉब। वी डोंट स्पेयर एवरी डे 8 to 9 hours in a center, how you can get a job, because he was qualified person. He knows कि if I am teaching 2 hours, you can get only 5%. But after my class, you can sit 2 hours more, you can learn 50%. Again, you learn, stay 2 hours more, you can learn 70%. Because he was electrical engineer. When the father is academic, qualified, definitely child will follow those paths. So he has proved himself what he is. So he, from the first day, father was applying a early binding, not a late binding. और सर आप इनको टास्क दे दो रात के लिए। मैंने अंकल ऐसा बच्चे को मत करो, बोले आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 6 बजे तो यहाँ से निकला है बेचारा वो, आप दे दो ना, क्यों रात का जो प्रोग्राम देखता है टीवी को भी बंद हो जाएगा। हम उसको जिंदगी भर के लिए बंद नहीं करने बोल रहे हैं, उसको हम 3 महीने के लिए बंद करने के लिए बोल रहे हैं। अब वो जो करे उसके बाद मेरे को कोई मतलब नहीं। अब अंकल का फोन आता है, अब कोई दिक्कत नहीं, समझे, वी सेटल राइट नाउ। So sometimes we have to go beyond the path to force. Don't do multiple activity in a day. You go for stressing your life for certain time of period. So what is SQL query in edu.net? If you apply SQL query in edu.net, it means you are achieving a late binding, which can degrade the performance. अगर जिस बच्चे की कोर्स अगर 3-4 महीने में जॉब नहीं लगती है, बुरा मत मानना, हम ये समझते हैं उसकी वर्क प्लान सही नहीं। .NET जावा 3-4 महीना इज एनफ। तो हमें SQL क्वेरी यूज नहीं करनी है, हमें SQL क्वेरी यूज करनी है, बट कैसे, उसको पहले कंपाइल करके और उसको कॉल करना है, बोलो कहां से, अपने फ्रंट एंड से। तो अब कैसे करें, डेटाबेस में बहुत सारे टॉपिक हैं, डेटाबेस के टॉपिक निकालो। पहला मिला, सबसे पहला मिला फंक्शन, उससे पहले टेबल है, वो टेबल देखना बेवकूफ़ी, सबको टेबल आता है, क्रिएट टेबल क्या है। फंक्शन देखा, प्रोसीजर देखी, ज्वाइनिंग देखी, कर्सर देखी, ट्रिगर देखी, बहुत सारे टॉपिक देखे। तो SQL क्वेरी को कहाँ पे लिखूँ अंकल, फंक्शन में लिखूँ या ट्रिगर में लिखूँ या प्रोसीजर में लिखूं या ज्वाइनिंग लिखूं का। देखिए सीनियर बंदे को पकड़ते हैं यार, उसने कहा फंक्शन तब यूज कर जब तेरे को एक वैल्यू लेना हो, कि फंक्शन मल्टीपल रिटर्न नहीं कर सकता। मतलब आप 5 पास करो, आपका रोल नंबर आ गया, 5 किया कुछ, ये मुझे नहीं पता, 10 पास किया आपकी प्रोविडेंट फंड की इंफॉर्मेशन आ गई, आपका रोल नंबर पास किया, आपने महीने में कितनी क्लास स्किप की है उसका इंफॉर्मेशन आ गया। जहां आपकी टेंडेंसी एक आउटपुट लेने की होती है, अब क्या यूज करो, फंक्शन। जहां आपकी टेंडेंसी मल्टीपल आउटपुट लेने की होती है, अब यह क्या यूज करो, स्टोर्ड प्रोसीजर। ट्रिगर करने का मतलब बनता नहीं, क्यों कि जैसे SQL क्वेरी लिखेंगे, ट्रिगर बोलो क्या बिना बात का,
फायर हो जाएगा। हम ट्रिगर यूज करेंगे रेफरेंस इंटीग्रिटी के लिए या प्राइमरी की फॉरेन की को मैच करने के लिए। पर एक जगह अपडेशन हो रहे हैं, हर जगह अपडेशन होने चाहिए। कर्सर करने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों? कर्सर से एक बार में एक रो फेच होते हैं। अगर मल्टीपल रो फेच करना है तो मुझे कर्सर यूज नहीं करना है। और देखा फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है कि प्रोसीजर में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मतलब इंसर्ट इनटू कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट फ्रॉम टेबल कर सकते हो। आप अंकल फंक्शन में नहीं कर सकते। यू कैनॉट डू इंसर्ट इनटू और अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन। और हमें भी इंसर्ट भी करना है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है, सारे काम करने हैं। किससे करेंगे बोलो? स्टोर्ड प्रोसीजर से। सो आई विल मेक अ प्रोसीजर टू परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशंस। सो बंद कर इसको ऑन करवा दें, जेट ऑन करवा दें। हाँ जाओ स्टार्ट करो, जेटर स्टार्ट करो। अच्छा ना हम लोग क्या बनाएंगे? स्टोर